Hey, so let's look at Nifty in 3 minutes. Basically, the day I think was pretty simple, but I missed a lot of money because the range was really, really big. So I didn't really want to take much risk. In the morning, what happened with volumes? I think I've shared this kind of a setup a lot of times in my post market. I'm not really sure, but I've shared at least once. So if you're not able to find this in my post market video on TradingView, you should check out my YouTube channel. I started a little late in posting videos on TradingView, but I have posted this somewhere. Uh, so you can check this kind of a setup on my YouTube channel. What is this kind of a setup? So basically, in the morning, there was an up volume, and that up volume, got reversed by a down volume. When that happens, you look for a consolidation, and you sell. Stop loss becomes day high. So two conditions: one, the low of that up volume, the candle which initiated the up volume, that low has to be broken with volumes. This was the volumes which came in these two candles, and you look for a consolidation, and your stop loss becomes day high. Now the problem here was because there was a lot of uh, the range was so big, the stop losses are have become so big, your position sizing comes down to maintain that risk. So that was a problem. So that is the reason I'm in this beginning. I think I said I missed a lot of money because I was very sure that this low will come, or this low will break. But uh, in my system, I think I shared an idea where I said that if 11:15 doesn't break 11 low, I may expect some kind of doginess, or some kind of reversal, which I was expecting. So that is the reason I was really really cautious here, because I was expecting this kind of a reversal, which happened in, I think, last after 2 o'clock. So what I did was I booked out around 11 o'clock 70% of my trades, which I took around this consolidation. So that was very very less. And then at the 30% I booked out according to this pattern, where I knew that this 11 o'clock low will break after, say, 12:30, which I did, and I booked it out here. Again, I missed all of this, which I knew in the morning that these setups usually will give a day low break. And then I got a setup. Then I didn't really do anything because, again, I was really really didn't really want to take that risk of losing what I made. I didn't really make much, so I didn't really want to take that risk of losing what I made. So I didn't go for this long trade, which was there in my system. And if you see, 2 o'clock high gives a very very good move towards up move, which is what this also did. But I didn't really do this, so missed this whole up move, and missed this whole bottom move, where because of the pattern, I really knew that this uh, will break day low. In terms of Bank Nifty, didn't really trade, not trading Bank Nifty till budget is over. The moves are really really, they are, it was pretty one sided, and it was supporting the sell side view which I had in Nifty, but I don't really want to trade Bank Nifty right now. Coming to positional, I'm not still interested. I do see a lot of volumes today on the first candle, but I'm not interested still to either go long or short. I'll wait either, probably for one more week. The budget is on Wednesday. Then we may have a couple of more days, or 3 4 more days of volatility, in my opinion. And then we should be a little more, you know uh, towards, we probably should understand, or probably I should understand where the volumes are to trade this. Right now I'm not doing positional trades. uh, आई थिंक दैट्स इट. निफ्टी में 3 मिनट फ्यूचर देखते हैं. आज बहुत ही ये पैटर्न तो मैंने बहुत बार, मेरे ख्याल से मैंने दिया हुआ है, बहुत बार नहीं, कम से कम एक बार तो मैंने दिया हुआ है अपने पोस्ट मार्केट वीडियो में. तो अगर आपको यहाँ नहीं मिला तो आप जाके मेरा यूट्यूब चैनल चेक करिए. यूट्यूब चैनल में भी मैं जनवरी से पोस्ट करना शुरू किया है. तो और यहाँ पर मैंने शायद 10 दिन के बाद पोस्ट करना शुरू किया है. तो आपको वहाँ मिल जाएगा इसका पैटर्न का. इस पैटर्न में क्या होता है, अगर जब भी एक अपमूव आती है सुबह सुबह, उस अपमूव का जो कैंडल इनिशिएटर होता है, जो कि ये था, उसका जब लो टूटता है, तो और वो लोड टूटता है वो डाउन वॉल्यूम से. लो सिर्फ लोड नहीं टूटना चाहिए, लोड टूटना चाहिए डाउन वॉल्यूम से, मतलब सेल की तरफ वॉल्यूम आना चाहिए, जो ये हुआ. और उस केस में मैं कंसोलिडेशन का वेट करता हूँ. कंसोलिडेशन के बाद मैं स्टॉप लॉस रखूंगा डे हाई, और डे लो हमेशा टूटता है. 99% चांसेस है डे लो टूटने के. और आपका रिस्क क्या है? आपका रिस्क है डे हाई.
तो कंसोलिडेशन के बाद। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिस्क, ऐसे मार्केट में रिस्क था, सिर्फ रिस्क था 40 पॉइंट्स का, और टारगेट था ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का, 250 पॉइंट्स का। लेकिन बोलना बहुत आसान है। मैंने क्या किया, मैंने ये सिर्फ ये मूव कैच किया क्योंकि मैंने एक आइडिया दिया था ट्रेडिंग व्यू पे, जो कि ये था कि 11 इसका रेफरेंस था कि 11:15 का लो अगर 11 o'clock तोड़ता है तो मैं सेल साइड पे हूँ, जो कि नहीं हुआ। इसलिए मुझे पता था कि यहाँ पर काफ़ी साइडवेज मूव्स आएंगे और फिर ये अप चले जाएगा, स्पेशली 2 o'clock के बाद, जो कि हुआ। पर उसकी वजह से मेरे को यहाँ पर 70% बुक करना पड़ा, और फिर मेरे को ये भी पता था कि ये टूटेगा, तो मैंने 30% यहाँ बुक कर दिया जैसे ये टूटा। तो अब मैंने ये पूरा जो मूव था ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का जो मूव था, 100 पॉइंट्स का, ये मैंने नहीं पकड़ा। और उसकी वजह से, क्योंकि मेरे पास इतने प्रॉफिट्स नहीं थे रिस्क में रखने के लिए, तो मेरे को ये 2 o'clock का अप मूव नहीं खेलना था, क्योंकि 2 o'clock का अप मूव अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पर 130 पॉइंट्स का, या 70-60 पॉइंट्स का। तो ये मुझे नहीं करना था। बनता है हाँ, 120 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बनता है ऑलमोस्ट, ये जो कि मुझे नहीं करना था। तो क्योंकि मेरे सुबह इतने प्रॉफिट्स बने नहीं थे जो मुझे रखना था, तो इसलिए मैंने ये खेला नहीं। तो अगर मैं ये इसको सिर्फ इसके हिसाब से खेलता तो मेरा ये पूरा मूव पकड़ लेता मैं, और ये पूरा मूव पकड़ लेता। लेकिन ठीक है। अ, अगर आप बैंक निफ्टी मैंने किया नहीं, अगर लेकिन बैंक निफ्टी में भी देखें तो सुबह से कोई अप मूव आई नहीं थी उसमें, सिर्फ डाउन मूव्स थे। और डाउन मूव्स में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स मिले, लेकिन मैं बैंक निफ्टी नहीं कर रहा, बजट की बात करूँगा। और यहाँ पर मैं अभी भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आज अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं पहले कैंडल में, लेकिन अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ जब तक मुझे अच्छे वॉल्यूम्स और नहीं दिख रहे किसी एक तरफ। तो मोस्टली मैं एक हफ्ता तो नहीं करूँगा, पोजिशनली कोई व्यू नहीं ले रहा मैं, और बजट के बाद देखेंगे क्या करना है इसमें। थैंक यू।